इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who has joined us today for Business Opportunity over Chai webinar series. This is a digital representation of a franchisee opportunity we have got for each one of you. Franchise India is 23 years old company which is present in 80 cities, and we have 275 plus consultant who is giving you suggestions, facilitating different business opportunities for you so that you take a conscious and informed decision of selecting a right franchise. We have helped more than 5,000 brands in expanding their business with our pan-India offices. And we truly claim that no one sells more business than us, because we have helped more than 78,000 investors in getting the right franchise for themselves. With this introduction, may I welcome and invite management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, once we'll take a complete and correct understanding from the brand, they will be talking about the industry insights, they will be sharing their suggestions, as well as we'll be taking all your queries. The brand which we are representing for each one of you is Sanjeevani. Yes, the brand which represents and presents the very important aspect of today's life, health and wellness. And we invite Mr. Mayank Garg, who is representing this particular brand, a proud owner and director at Sanjeevani. Thank you so much, Mayankji, for joining us today. Before we start the formal presentation from your side, we would like to understand the journey of Sanjeevani from your side. So, good afternoon, everyone. Thank you, Archana ma'am. Thank you, Sonia ma'am and Gaurav sir for this webinar. So, Sanjeevani, at Sanjeevani, we started in 2006, back in 2006, when organized pharmacies used to be there used to be a challenge to get a good pharmacy shop nearby. It used to be a traditionally run business. So at that time, Sanjeevani was conceptualized, and we started our first store in South Delhi on Mehroli Badarpur Road. So in initial days, it was difficult for us to ensure to make our customers understand that we are selling good medicines at same price at what they were buying earlier. So in 2 to 3 years time, we struggled, and we made our niche, we made our customer base and market. In 2009, we opened our second store in New Prince Colony.
Sooner we realized that there was a requirement for 24/7 stores. So we upgraded both of our stores to 24/7. And by at that time, even today, 24/7 pharmacy shops are very less in northern India. So we are one of the organized pharmacies who are operating 24/7 stores outside hospital. So at these two stores, we service around 1,000 plus patients on daily basis. These are our flagship stores. We are operating 24 hours on both these locations. In 2015, after learning about industry for almost 9 years, we thought of franchising. So we started with franchising with Franchise India. So that time we were focused on franchising in Delhi. With Franchise India support, we were able to establish our network in Delhi. That time, owning a pharmacy shop, that too a franchise pharmacy shop, was again new to people, new to even CAMs who used to pitch it. So it was a bit difficult, or you can say it took time for us to establish that yes, a pharmacy store can also be franchise. So in 2015-16, it was great success for us, and we were able to roll out our first 10 stores within 11 months. After that, we started expanding pan India. So in next 2 years, we expanded our network across India, again with Franchise India help. And in next 2 years, we were able to roll out another 50 stores. During COVID, pharmacy franchise took next step, and we got very good response from market. In last 4 years, and especially in last 1 year, we were able to sign 100 plus stores. So now total signups which we have done so far is 300 plus. Among that 300, almost 150 stores are live. These stores are again spread across India. Major numbers are in Delhi NCR, then east part of India, we have good number. Major USP of Sanjeevani is, first of all, we are an organized pharmacy chain. It's not like a traditional pharmacy shop where owner is sitting and then he may be buying genuine medicines on bill and he may not be buying genuine medicine. So in our case, whatever we procure it on through proper channel and on bill. So we focus more on accounting part, that inventory management should be taken care properly, so that we are able to service our customers and we are able to have an accounting what all is available at store. Because at pharmacy, the kind of model which we are running is a convenience store model, where people comes and they want to buy medicines immediately. So if our inventory is well stocked up, we will be able to service them efficiently, and we'll be able to complete their requirements. So our major focus is on accounting part, that whatever inventory we have in our store is accounted. Next is our this discounting and product availability. So product availability, we have one of the most extensive product range available at any of our competitors. So we service somewhere around 15 to 16,000 SKUs on regular basis, and our item master contains around 1 lakh medicines. So we have one of the biggest item master range across India, and we are flexible on getting all medicines whatever is required in that locality. So we are directly, you can say, competing with the local vendor who's completing almost complete product range which is required in that locality. Next is 12-hour delivery format in Delhi NCR, where we have our own delivery network. So whenever we get any orders from any of our customer or through our franchise partner, we are able to service it in next
24 hours or 12 working hours. So we request them to place order at night, and by next day, we send them, we deliver them the stocks. Now, when we talk about a pharmacy shop, usually the first question which comes to any of our franchise partners' mind would be that I'm not a pharmacist, whether I'll be able to run a pharmacy shop, whether I'll be able to own a pharmacy shop. So we made it very simple for any of our client to own a pharmacy shop. Anyone from any background can own a pharmacy shop. It's just they have to hire a pharmacist who has that diploma in pharmacist or degree in pharmacist, a pharmacy, and he can apply for drug license. So as a franchisor, we help them in getting a pharmacist and getting drug license from the department. So if all documents, whatever is required by drug department are there available with franchise owner, we help them in getting a pharmacist. All those documents are compiled and submitted to the department. Usually drug license is taken on owner's firm name. So license will be owner's license. Pharmacist will be a competent person who is there to make sure that whatever medicines are sold in a proper manner. In case any pharmacist leaves in future or he wants to resign, then we get a new pharmacist. License would be same. So anyone who's not from this background can own a pharmacy without having a license on his name or without studying about pharmacy. So we help them in getting the drug license from concerned drug department through third-party channels, through people who are available, who help us in getting that drug license. Secondly, to run any business, you need to have a good location. So we help them in identifying a location. It's a mutual effort. Franchise partner also involves in it, and he also look for suitable locations which he finds good according to his knowledge, and we validate those locations whether that would be good for us or not. Usually location, we are not looking for any posh kind of location, as we are a convenience store and a small store model. So we look for 200 square feet of space in a locality where we have good footfall or some nursing home or hospitals are available. That is preferred. More than 200 is not required in a convenience store model. So 200 to 300 square feet is the maximum area we require to operate a pharmacy shop. Minimum area requirement is 110 square feet as per drug license. But for our business model, ideally we look for 200 square feet. So we help them in getting a proper location. If they have a location, we help them in validating whether that will be suitable for our business or not. Once we get a location and we apply for drug license, we help them in identifying, designing the store, how to design your store. So we help them with a 2D layout and a 3D layout, how their store would look, so they can actually visualize by seeing that photographs that how their store would look. That makes them understand how it should be designed or how that execution part to be done. When we do interior, again, we focus more on cost-effective interior. We are not looking for plush interiors. We look for basic interiors which would stock up our maximum number of SKUs as our SKU range is high. So we are looking for interior which would accommodate maximum number of SKUs. So interior layout would be provided by us. One can get interior through their own vendors also and company vendors also. There is no such compulsion that one should get interior done from company only.
Once we get the interior done, usually license takes 45 to 60 days. It depends on location to location. Like in eastern part of India, usually it takes 3 to 4 months time, whereas in other cities it can be we can get license in 15 to 20 days also. So once we get the license, our interior should be ready. Interior in interior, we expect storage space and cold storage at the time of inspection from drug department. Usually, once we are ready with that, then only we apply for the drug license. In 60 days, we get the drug license, and after getting drug license, we look for suitable staff for store operations. Again, our team will help you in getting that suitable staff. Depending on location, again we can get that we help them in getting a pharmacist, or through third party consultant we help them in getting suitable resources. At that time we plan inventory. In our inventory, in our initial inventory we provide them almost 5,000 type of products. In those 5,000 type of products, we majorly focus on allopathic medicines, as we are a pharmacy shop. So we have 60% of our inventory is fast moving allopathic medicines. All those medicines are from good companies. Usually doctor prescribe medicines which are manufactured or marketed by good companies. So we keep that in mind and we stock those medicines so that we get maximum, we are able to service maximum items from a prescription which we get. So on average margin in allopathic medicine is 25 to 30%. Minimum margin on those medicines are 20%. So depending on product to product, margin varies. Next category we keep is Ayurvedic medicines. Ayurvedic medicines gives us around 10% of our sales volume, and similarly we invest 10% of our inventory in Ayurvedic medicines. So in Ayurvedic medicines, we have basic Ayurvedic products like Kaim, Churn, Nityam, the one where we buy them on suggestions from our friend and family. So those only we keep in our stock. Next 10% we have surgical products. In surgical products, we stock majorly we stock first aid surgicals and ortho surgical. First aid surgical contains crepe bandage, cotton bandages, all those, and ortho surgicals contain kneecap and all that stuff. So average margins on surgical is 35 to 50%, depending on product to product. Next category we keep is general products. General products, one which people usually buy from pharmacy shops. So like Horlicks, Bonvita, diapers, and general products like sanitary napkins, food products. So those we keep. So that gives us somewhere around 10 to 15% of our revenue. And we invest 10 to 15% of our investment in those product range. So this way we complete our product range. So initial inventory will be for 5 lakh rupees, 4 to 5 lakh rupees inventory we give initially. In those 4 to 5 lakh rupees, 60% would be medicine, 10% Ayurvedic, 10% would be surgical, and 15% roughly would be general products, and remaining 5 would be OTC and generics. So we also keep generic products. Rather than promoting our own private labels, we try to keep products where our franchise partner, they don't have to give any effort in selling. So we have all good company generics available with us, like Cipla and Bexy company also makes generics. So we stock those generics with us. On generics, average margin which we get is 60 to 70%. 60 to 70% margin will be on MRP. If we consider margins on cost, it will be like 5 times or 6 times of the cost value. So generics will give us almost 5 to 10% of our total revenue, and we invest accordingly.
So once we get the drug license and our store is ready to get live, we plan our initial inventory. After the initial inventory, we provide training to our franchise partner. That training will be provided for 7 to 10 days. That will be on-site training. Our trainer will be traveling to franchise store. He'll be helping them in merchandising and reconciling initial stock. Secondly, he'll be helping with the software which is provided by us. He'll be helping our franchise partner how to operate that software, how to uh, keep all the reportings, how to check all the reportings in system. So owner will also be trained and employees will also be trained about the software. After software training, he'll be helping in making that store live. After store live, he'll be arranging a visit to nearby doctors. Again, doctor tie-up will be done in a manner where we'll be requesting nearby doctors, we'll be introducing them about our company, and we'll be informing that we don't substitute. Usually, doctors they are more concerned on products. They are more concerned on getting same medicine which they have prescribed, because whatever doctor prescribed, they prescribed according to their understanding that which medicine would be suitable to any patient. After checking, after diagnosing patient, so they prescribe medicine. Now usually pharmacy shop, they substitute those medicines, so there that treatment may not be appropriate, or whatever understanding a doctor has, that may not be met. So in that case, we assure doctors whatever prescriptions we get from them, that will not be substituted. So when we ensure them, so that is the only way we can request any doctor to send prescriptions to our store. So this kind of assurance and awareness we give to nearby doctors. This needs to be regularly informed, or our franchise partner, they regularly visit doctor to ensure that they get proper business from them. So this is how we this is how we make our store live and we train our franchise partner. After that 7 days of training, our franchise partner will get online support for next 5 years. So we have a support team at our backend who will be available to any of the who will be there to help them with any of their queries they'll be getting in next 5 years. After that, whatever medicine will be sold, that can be procured from backend. So that medicines which we procure from backend will be supplied to them in next 24 hours. Like what if we are getting any orders from any of our franchise partners that we service in next 24 hours, then there would be the logistic time. If it is in Delhi NCR, it will be supplied in next 24 hours. But if it is outside Delhi NCR, we'll be dispatching it in within 24 hours, and 2 to 3 days or 4 days would be the logistic time which will be there. As we are a convenience store and we are a pharmacy shop, so there's another question which comes is like, if some patient or any of our patient needs medicine immediately, how will be servicing that? So for that, we can ask our franchise partner either to get medicines from nearby Sanjeevani store, or they can buy locally also. We give them right, the stores which are outside Delhi NCR, we give them right, they can procure locally also, so that our patients would be serviced properly. One should not wait just because we are getting medicines from Delhi. So we work on a model where we give them right to purchase their urgent supplies from local market. This is our business model, which we have developed in last 5 years. As a Sanjeevani, major USP of associating with Sanjeevani is we are one of the first company who has started franchising in as a market leader, or you can say as we have started franchising in pharmacy. So we know how franchisees service, and we have evolved our business model after experiencing whatever experience we got in for last 5 years.
we have evolved our business model. Every year we learn many things and we keep on updating ourselves. Whereas anyone who's seeing our business and who's seeing that yes, Sanjeevani has rolled out so many stores or they've signed so many franchise, many people have came after us. Many of them has copied our business model, but the experience which we have, no one can get that experience. They will get experience after investing time which we have given to industry or which we have given to this model. So this is our major USP as a franchise partner, as a franchisor. As a franchise partner, one can expect he may or he may not be from the industry. And if he's coming up with any problem or any query, we are there to help him out. We are there to guide him how to get that query, how to get their problem solved. After taking franchisee, it's not like a franchisor will be running their shop, or it's not even on a different side that if we have given franchise, now only franchisee will run the shop. It's a mutual effort which has to be given to have a successful franchise. Our franchise partner who are aggressively giving time to their franchise, to their business, are earning very well in this industry. Being a franchise partner, they are doing very good. People who are looking only for investment may take some time to get their business stabilized. It's not like it cannot be stabilized, but it may take some time. But people who get involved and really want to get success in this business, so we are there to help them out. We are there to be a part of each and every hurdle which they'll be getting. We'll help them in getting their business. Yes, Archana ma'am. So this was from my side. Thank you so much, Mayankji, for this presentation. And before we take the questions, Mayankji, would you also want to talk about the financial investment overall? How much would that be? And maybe Yes, 10 minutes we can spend on the same. sure, ma'am. So investment for a 200 square feet store would be around 13 to 14 lakh rupees. In 200 square feet store, we expect 2 to 3 lakh rupees would be invested on setup part, that interior cost. 1 lakh rupee would be for the fixed equipments like AC, fridge, computer. If one has, if they already have those equipments available, we can use them. Drug license cost, official fee would be 3,000, and documentation and all should cost somewhere around 20,000 rupees. Initial inventory will be for 4 lakh rupees, 4 to 5 lakh rupees. We charge one-time franchise fee of 3.5 lakh rupee plus taxes. After that, we don't charge any royalty from our franchise partner. So total comes to around 12 to 13 lakh rupees. Then we want our franchise partner to have at least 3 months of working capital, 2 to 3 months of working capital. So that would be somewhere around 1.5 to 2 lakh rupees. Is it over, Mayankji? Yeah, ma'am, it's over. I have already mentioned all the points. Interior would be 2 to 3 lakh rupees. Fixed equipment will be 1.5 lakh rupee. Our if initial inventory will be 4 to 5 lakh rupees. Franchise fee will be 3.5 lakh rupee plus taxes. So total will be approximately 12 lakh rupees. Thank you so much, Mayankji. I think you have given a very detailed, already a lot of answers which you have, which are being, lot of questions which people are asking have already been answered by you, and very helpful. I think you've described each and every aspect, the category mix, the inventory mix, sales mix, I think training, which is very important part, and pharmacist, which almost everybody who wants to get into a pharmacy business who wants to know. So we have kind of covered all of that. And friends, before I start, I would like to also thank Mayankji for the association. We have worked with Sanjeevani ever since they have started franchising, and we're very proud to see today they've reached a count of more than 300 odd franchise partners across the country.
And we started working with them, from the very first outlet they started franchising. And I also feel, pharmacy overall is a very, very competitive market, very big hyper local competition is there. And one thing which has become very clear, even in this category, is trust. Whether the format is organized or traditional, consumers establish a level of trust with the pharmacy that they patronize. And organized formats like Sanjeevani, they are well positioned to establish this trust. And I would say maybe on a more solid foundation, because they offer genuine drugs, they deploy qualified personnel, and offer better services. And pharmacy retailing in India overall, if you look at it, is a very well developed business. However, there are other formats, any other like any other format of retail. The challenges typically would come in training of people, and second is establishment of strong supply chain, including robust systems and processes, or maybe I would say management practices which are required. And Sanjeevani has over these years found their answers on all these issues, I would say. And they started with Delhi NCR, and they perfected their model in Delhi. And then they went out to other locations, opening even master area franchisees that we worked for Sanjeevani to open in these years. So Menchi, I'll take some questions while most of these are already answered. I think one thing, and friends, I will also request, I see a lot of questions coming in. Some we have tried to answer, and I will take all these questions which you are asking. And also I will request, whenever you put the question, अगर आप अपना city भी आप mention करेंगे जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं, it will also be helpful for us to take these questions from all of you. So Menchi, to start off with, हमने पूरा capex का बात किया. So if I have to just recap the entire model, we need a basic 200 square feet of area to get started off with, which can easily accommodate the entire SKU mix जिसकी हमने बात की है, जहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रेंचाइज फीस का मिला के तकरीबन आपका 12 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है. And out of which 4 lakhs is the inventory, 3.5 lakhs is the franchise fees, and then we have investment on equipment, interiors, which is required to be put. So Menchi, इसमें अगर हम operating expenses की भी अगर हम बात करें, so typically इसमें क्या हमारे operating expenses रहते हैं store के, क्या हमारा deployment manpower का होना चाहिए, अगर उसके बारे में भी आप बता सकें. और also if you can give a comparison, because आपके 300 stores, they're all spread out across India. Tier 1 में भी हैं, Delhi running one of the oldest stores, and then you have locations which are tier 2 also. So uske bhi agar aap bata sake, what is the kind of throughput any store gives over a period of time? So ma'am, initially एक तो आपने OPEX की बात करी. OPEX में for a 200 square feet OPEX would be around 70 to 80,000 rupees, जिसमें हमारा rent part include होता है, हमारा salaries रहता है, मिसलिनियस आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस रहते हैं. रेंटल हम लोग कंसिडर करते हैं 250 टू 300 स्क्वायर फीट का हमारा रेंटल रहना चाहिए. उससे ऊपर का रेंटल हम यूजुअली नहीं इनकरेज करते अपने फ्रेंचाइज पार्टनर्स को. उसके बाद स्टाफ में मैम इनिशियली हमें 2 रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है. एक हमारा सीनियर स्टोर मैनेजर जिसकी सैलरी 18 टू 20,000 रुपीज होनी चाहिए, और एक हमारा जूनियर रिसोर्स जो इनिशियली हमारा डिलीवरीज भी करा दे और वो एक हेल्पिंग हैंड हो हमारे फार्मासिस्ट के लिए. सो उसकी सैलरी रफली 12 टू 15,000 रुपीज के बीच में रहती है. थर्ड मैम हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आते हैं ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली आते हैं, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स अगेन अनदर 7,000 रुपीज. सो 14 एंड अप्रॉक्स 32 आपका ये हो गया 48 and 40,000 rupees for rental. Almost 88 to 90,000 rupees का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहता है मैम. अगर हम मतलब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर ओनर खुद बैठते हैं तो इनिशियली वो एक रिसोर्स कम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 रिसोर्स से वो शुरू करें. ओनर अगर खुद नहीं बैठना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ स्टाफ रन बिजनेस चाहते हैं, तो 2 रिसोर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैम. इसके अलावा जो इसका कैश ब्रेक इवन आता है मैम 90,000 रुपीज के लिए हमें मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीस का बिजनेस चाहिए होता है मैम. 5 to 6 lakh rupees post discount, which is approximately 10% discount which we offer to customers. So उसके बाद 5 to 6 lakh rupees का revenue चाहिए होता है 15 to 20,000 rupees daily का. उस revenue पे हम लोग cash break even पे आ जाते हैं. अगर हमारी लोकेशन अप्रोप्रिएट है, ओनर्स टाइम देते हैं और स्टाफ अप्रोप्रिएट है, तो ये हम 2 से 3 महीने में अचीव कर सकते हैं मैम. ऑन अ वेरी maybe in a
इन अ स्टोर वेयर वी गेट लेस रिस्पॉन्स, जहां हमें कम रिस्पॉन्स मिलता है वहां ये हमें 6 to 9 months में अचीव होता है मैम। लेकिन हमारे बिजनेस का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या होता है कि ऐसा नहीं होता डे वन से जीरो सेल्स नहीं होती है, हम लोग कुछ ना कुछ सेल्स कर रहे होते हैं। मे बी हम लोग 6 लाख नहीं अचीव करें, 2 से 3 लाख अचीव करें, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है मंथली वो 50% 60% हमें डे वन से हमारे स्टोर में से ही निकलना शुरू हो जाता है। रिमेनिंग 40% हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर को पॉकेट से डालना होता है टू कंप्लीट देयर मंथली एक्सपेंडिचर। फार्मेसी में हमें हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर को डे टू डे ऑपरेशंस में घुसने की कभी भी जरूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा भी पीपल्स मैनेजमेंट पे काम करते हैं, थोड़ा सा भी वो अपने रिसोर्स को अच्छे से करते हैं और पीक आवर्स के 1 और 2 आवर्स वो दे देते हैं, तो स्टोर अच्छे से परफॉर्म करता है। जी राइट। नहीं जी, इसमें जब हम सैलरी की बात करते हैं तो इसमें फार्मासिस्ट का भी जाएगा एक पोर्शन मंथली मैम, बेसिस। 18 to 20,000 रुपीज जो है वो फार्मासिस्ट का कंसिडर ओके करा है। ओके In pharmacist, again, we have two type of pharmacist. One is part-time pharmacist and one is full-time pharmacist. जो part-time pharmacist होते हैं वो 5 to 7,000 रुपीज में मैम मिल जाते हैं, वो मैंने miscellaneous portion में कंसिडर कर लिया है। हाँ जी हाँ जी। जो 18 to 20,000 करा है वो एक अच्छा रिसोर्स जो हमारे स्टोर पे टाइम भी स्पेंड करेंगे और ऑपरेशंस भी हैंडल करेंगे और कस्टमर भी हैंडल करेंगे। राइट राइट। जी तो बैंक जी, इसमें हमारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि गाइडलाइन जैसे आई थिंक बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग ऑन दी एलिजिबिलिटी, हमारी खुद की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपने बोला फार्मासिस्ट एंड ये लाइसेंस, फ्रेंड्स जस्ट टू मे बी आई थिंक बिकॉज आई सी ऑल ऑफ यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, you need not be a B pharma, you need not have diploma yourself or a degree yourself. इसमें एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस होता है, फार्मासिस्ट होता है जो आपको हायर करना होता है। एंड अगर आप खुद ये डिग्री आपके पास है देन एब्सोल्युटली नीड नॉट हायर एनीबडी। अगर आपके पास नहीं है ये डिग्री देन यू नीड टू हायर अ फार्मासिस्ट। सो इसमें मैम जी, इसमें गाइडलाइंस की है, जैसे आपने बोला पार्ट टाइम एंड फुल टाइम का, बट अगर एक हम फार्मा स्टोर की बात करते हैं तो कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि क्या मिनिमम टाइम फ्रेम एक फार्मासिस्ट को स्पेंड करना होता है? इज दैट समथिंग व्हिच यू वांट टू मैम, गिव क्लैरिटी टू? मैम 9 hours is minimum. 9 hours working should be there at least at store. As per government guidelines, जो भी हमारे वर्किंग आवर्स हैं उस टाइम पे फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए स्टोर पे, क्योंकि जो भी मेडिसिन हम डिस्पेंस कर रहे हैं कस्टमर को, फार्मासिस्ट की मॉनिटरिंग में जाना चाहिए। सो हम लोग जो 2 फार्मासिस्ट रखना चाहते हैं, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, उसका पर्पस भी यही रहता है कि जो पार्ट टाइम फार्मासिस्ट है वो कुछ टाइम दे रहा है और फुल टाइम पूरे टाइम स्टोर पे अवेलेबल है, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स रहते हैं, 12 आवर्स वर्किंग आवर रहते हैं एक फार्मेसी शॉप के। तो उस केस में यूजुअली हम लोग उनको ओवर टाइम भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। राइट। जो रेगुलेशंस कहती है फार्मासिस्ट अवेलेबल होने चाहिए जब भी स्टोर हो, और हम भी ये अपने फ्रेंचाइज पार्टनर को बोलते हैं कि फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए जब आपका स्टोर खुला होगा। करेक्ट करेक्ट। So friends, just to maybe again reiterate, ये पूरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपकी 12 लाख की है। Somebody is asking on details on the OPEX and CAPEX. We will share with you before we get you on a call with Mayank ji when we do the discovery day, and we are looking forward to a big event that we'll align in the coming week. और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है टिपिकली आपके 70,000 तक के रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टियर 1 2 जहाँ पे भी आप देखते हैं रेंटल आपका वेरी करता है, बट बाकी कॉस्ट टिपिकल आपकी सेम ही रहती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, सैलरी के ऊपर। एंड इट विल टेक एटलीस्ट अबाउट 3 to 4 months टाइम टू रीच दैट ऑप्टिमम लेवल। जो इनकी एवरेज सेल्स है जो बैंक जी बता रहे हैं वो तकरीबन इनकी 5 से 6 लाख तक आपकी निकलनी चाहिए, जिसमें आपका 90 और 1000 का आपका आफ्टर टेकिंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस आपका ये मार्जिन आपका बचता है। एंड जो आपका मैम जी, इसमें आरओआई की अगर हम बात करें, कितना टाइम लग जाता है पूरा आरओआई रिकवर करने में? मैम, आइडियल सिनेरियो में जहां ओनर ने स्टोर को टाइम दिया होता है, लोकेशन अप्रोप्रिएट है एंड स्टाफ हमारा उस तरीके का है जो बिजनेस ड्राइव करता है, 1.5 से 2 साल में आरओआई निकल जाती है। आप अगर 6 लाख से ऊपर जो भी रेवेन्यू करते हो सारा आपका नेट प्रॉफिट में आता है। यूजुअली हमारा एवरेज स्टोर जो करता है मैम 9 लाख रुपीज अ मंथ वो आराम से अचीव कर लेता है, 30,000 रुपीज अ डे। सो आराम से हम 1.5 से 2 साल में अपना स्टोर, अपना इन्वेस्टमेंट हमारे को वापस मिल जाता है, हमारा आरओआई निकल आता है मैम। तो रफली 50 to 60% आरओआई रहता है। Okay. लेकिन इसमें मेजर जो
कंडीशंस है मैम वो यही है कि ओनर वहां पर एटलीस्ट पीक आवर स्टोर पर दें, और स्टाफ पे अगर वो अपना यूजुअल हमारे फ्रेंचाइज पर हैं, कोई भी आदमी आता है वो कहता है कि फ्रेंचाइज ले लिया उसके बाद स्टाफ में 10,000 रुपए का रखूंगा, 8,000 रुपए का रखूंगा, तो वो आपके 12 लाख रुपए को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे और आप 10,000 रुपए का रिसोर्स रखेंगे तो वो कभी बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा आपका। करेक्ट। इनिशियल आपको लग रहा है कि वो 10,000 रुपए वाला आदमी मेरा काम चला देगा, लेकिन लॉन्गर रन में वो आपको कभी रिटर्न्स आएंगे ही नहीं ना, आपको वो फेलियर बिजनेस मॉडल बनेगा। राइट। वहीं पे आप एक रिसोर्स अच्छा रख रहे हैं, 20,000 18,000 रुपीज का आप अच्छा रिसोर्स रखते हैं, तो वो बिजनेस उसी को ड्राइव करना है, क्योंकि फर्स्ट फेज तो वही है ना स्टोर में मैम। कस्टमर को इंटरेक्ट करेगा, कस्टमर यूजुअली आदमी जो भी एक दवाई खरीदने आता है वो वहां पर सेल्समैन से कनेक्ट होता है। अगर टीम अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो कभी कनेक्ट ही नहीं होगा और कभी रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। Absolutely, नहीं बहुत important point है मैंग जी आपने बताया, because we have seen also, you know, because we deal with so many franchisees and we have dealt in the last years, and we see a lot of partners they start cutting cost, especially पहले दूसरे महीने में ही वो अपनी cost cutting शुरू कर देते हैं, which really affects the business. तो कम से कम 3 से 6 महीने का जेस्टेशन टाइम फ्रेंड्स आप अपने किसी बिजनेस को दीजिए, फार्मेसी को भी दीजिए, बिकॉज फार्मेसी इज ऑल्सो कन्वर्जन बिजनेस। हर सिटी में जहाँ पे भी आप खोलें कोई ना कोई फार्मेसी आपका चल रहा होगा, तो इट टेक्स टाइम फॉर द ऑडियंस टू कन्वर्ट टू अ न्यू फार्मेसी विच हैज ओपन। सो कम से कम 3 से 6 महीने का जेस्टेशन टाइम आप अपने बिजनेस को जरूर दीजिए। And we should not cut cost and manpower, because it is not a very manpower intensive business. बहुत सारा आपको cost या number of people are not required. जो भी 1 या 2 resources हमारी रहेंगी, these have to be very qualified resources, because your entire throughput or efficiency of the outlet is dependent on how well trained the staff is. ओके बहन जी, 2-3 क्वेश्चन जो और बहुत कॉमन है, मैं आई विल टेक देम कलेक्टिवली आल्सो। एंड एक जो मैं लेना चाहूंगी वो आपकी लोकेशंस के ऊपर है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं जहाँ पे आप जाना चाहेंगे, बिकॉज आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेजेंस है। जहाँ पे कुछ लोकेशंस जो मुझे दिख रही है, अमरावती आई सॉ, बिहार से 2-3 लोकेशंस है विच आई सॉ, कथियार है, गोपालगंज है, बॉम्बे, कोलकाता, एंड देयर मेनी मोर लोकेशंस व्हिच आई एम सीइंग व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस। सो कौन सी हमारी प्रायोरिटी सिटीज रहेंगी इस टाइम पे जहाँ पे हम एंटर करना चाहते हैं? और दूसरा, अगर हम कहीं एरिया या मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजीज या क्लस्टर भी क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे कोई टेरिटरीज ओपन है जहाँ पे मे बी टेरिटरी बड़ी और वहाँ पे हम बड़ा पार्टनर भी लाना चाहेंगे? मैम मैं लास्ट क्वेश्चन को फर्स्ट आंसर करता हूँ। देखिए, एरिया फ्रेंचाइज या मल्टी स्टोर फ्रेंचाइज में प्रॉब्लम हमें कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उस पार्टनर का एक माइंडसेट क्लैरिटी हो मैम। वो क्या सोचता है कि मैंने मास्टर फ्रेंचाइज या एरिया फ्रेंचाइज लिया, अब ब्रांड करेगा सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं करना है। जबकि उनको ये समझने की जरूरत है, जहां ब्रांड की रीच खत्म होती है वहां वो मास्टर फ्रेंचाइज अपॉइंट कर रहे हैं कि आप आगे जाकर काम करें। एब्सोल्युटली। तो अगर हमारा कोई मास्टर फ्रेंचाइज बनना चाहता है, वो कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ड्राइव करने की, रादर देन वो मुझसे पूछे कि मैं कितने स्टोर लाके दूंगा, मुझे उससे पूछना है कि सब आप कितने स्टोर नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में ला सकते हैं, क्योंकि हमारी रीच जहां खत्म हो रही है वहां मास्टर फ्रेंचाइज सीख कर रहे हैं। सो वो थोड़ा सा वहां पर माइंडसेट हमें अच्छा, अगर कोई पार्टनर मिलता है डेफिनेटली हम लोग ओपन हैं उसके लिए, लेकिन कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको ही हमें नरिश करना है या जिसको ही चलाना है, उसके लिए फ्रेंचाइज पार्टनर की जरूरत नहीं है मैम। जो आपने एरियाज की बात करी मैम, हर लोकेशन एक पोटेंशियल लोकेशन है फार्मेसी शॉप के लिए, जहां पर 1000+ फैमिलीज का फुटफॉल हो। अगर एक क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी वाला स्टोर है, वहां पर चैलेंज ये आता है कि उसके पास लिमिटेड कस्टमर्स है, तो उसको सर्विस लेवल अपना हाई रखना होगा। वहीं पे अगर कोई ओपन मार्केट है जहां पर रोज नए कस्टमर्स आते हैं, तो वहां ठीक है, वो अच्छा सस्टेन करेगा, लॉन्गर रन में बिजनेस आएगा। लेकिन जैसे हमारा लॉकडाउन के बाद हुआ, तो जो हमारे सोसाइटी स्टोर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा करा है, क्योंकि सोसाइटी स्टोर्स के पास वहीं पे उनको नियर बाय डिलीवरीज वहीं से पॉसिबल हो पा रही थी, दूर वाले स्टोर से नहीं हो रही थी। या जो मेन रोड्स पे थे वहां पर हमें थोड़े से चैलेंजेस लगे। तो जैसा उनका बजट है उस हिसाब से उन लोगों को वेंचर करना चाहिए। अगर लिमिटेड बजट है तो सोसाइटी शॉप हमेशा अच्छा ऑप्शन है, अगर बजट बड़ा है तो हॉस्पिटल के पास या बड़े रूट्स पे कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपका इन्वेंट्री बढ़ेगा। वहीं सोसाइटी शॉप्स में आपका इन्वेंट्री लिमिटेड रहेगा,
Correct. And also maybe the size of the store would increase and it has to be well stocked 24 hours. Right. Menk ji, मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ जो हमारे ऑडियंस से हैं. I think I'll take one question from Mr. Jaideep Nayak. He's our consultant from Bombay. He's in IFC. He wanted to know, if we have a 24/7 format, आपने presentation में बताई, you already run one. And if somebody wants to operate 24/7, what is the process and will the company help in getting the necessary permission? Yes, ma'am. In 24/7 we need 3 pharmacists. हमें 3 pharmacist की जरूरत होती है. 12 hour format में हम लोग एक pharmacist से business operate कर सकते हैं. वहीं पे अगर हम लोग 24 hour में जाते हैं तो 3 pharmacist की requirement है. महाराष्ट्र region में कुछ areas में 2 pharmacist का भी culture है कि we need at least 2 pharmacists. If owner is not the pharmacist, then we need 2 pharmacists. वो अलग अलग क्लस्टर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने छोटे से रूल्स में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा हुआ है. अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में भी, अगर हम थाने रीजन में थोड़े से रूल्स अलग हैं, वहीं मेनलैंड मुंबई में थोड़े से अलग हैं. सो हमें 24 आवर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेक्टर में जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो कन्वीनियंस स्टोर मॉडल है, फर्स्ट 12 आवर फॉर्मेट वायबल करना चाहिए, देन 24 आवर में अपग्रेड करना चाहिए. क्योंकि जो बंदा 12 लाख रुपए लगा रहा है, वो 12 लाख रुपए का ऑपेक्स लेकर नहीं बैठा हुआ कि वो 12 लाख रुपए अगर इन केस कैश बर्न हुआ तो वो उसको सस्टेन करेंगे. हाँ जी. सो हम ग्रेजुअल फेज में करें कि पहले हम लोग 12 आवर फॉर्मेट को वायबल करें और नेक्स्ट डे से आप 24 आवर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, आपको कहीं ना कहीं 3 टाइम्स रिसोर्स रखने हैं. आपको डबल, आपका हर चीज डबल हो जाएगी और रिसोर्स रेंट पे 3 टाइम्स हो जाएगा. तो वो चीज को हमें देखकर काम को करना होगा. बट वी कैन हेल्प ऑन दैट. वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ ड्रग लाइसेंस फॉर 24 आवर. We can help you in managing in training the team how to manage 24-hour store. Those all things we can take care. Right. And मैम जी, इसके साथ में ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बताया कि पहले हम एक थ्रूपुट पे आएंगे एक आउटलेट के, उसके बाद ही 24/7 हमें ऐड करना चाहिए फॉर्मेट. इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है मैम जी अगर हम 24/7 करते हैं? और ये इसकी अगर आप थोड़ी बहुत रेगुलेशंस भी बता पाए 24/7 की, किन लोकेशंस पे हो सकता है, नहीं हो सकता, और क्या इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइसेंस की भी लगती है, नहीं लगती? मैम 2 चीजें यहाँ पर, 2 लाइसेंसिंग यूजुअली गवर्न करते हैं हमारे बिजनेस को. एक ड्रग लाइसेंस और एक अपना लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस. कोई अगर अलग अलग बॉडीज का होता है, जैसे ईस्ट पार्ट में ट्रेड लाइसेंस होता है, महाराष्ट्र में कोई लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोई लाइसेंसेस होते हैं. तो ड्रग लाइसेंस के केस में हमें सिर्फ 3 फार्मासिस्ट एंडोर्स करने होते हैं अपने ड्रग लाइसेंस में. मतलब 3 कॉम्पिटेंट पर्सन अवेलेबल होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे शॉप 24 आवर के लिए एलिजिबल हो गई. जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे हमें 24 आवर की परमिशन लेनी होती है. जैसे 12 आवर की मिलती है वैसे ही 24 आवर की मिलती है. सो कोई एडिशनल कॉस्ट लाइसेंस लेने की ज्यादा नहीं है. 1000-2000 रुपीज ज्यादा होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है. ड्रग लाइसेंस की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगी क्योंकि वी नीड 3 फार्मासिस्ट. हाँ जी, राइट. which have to operate 24 hours. Okay, and we have somebody, I don't have the name, it just comes with some numbers. He's asking, is lab testing or pathology also available with the pharmacy franchisee? Ma'am, we have last year we started lab, but we were not much aggressive on franchising. We got very good number of leads for lab also, but we were not giving earlier. So this month onwards, after this Navratri, we will be starting lab franchisee. Right now, any of our pharmacy can book lab test. We have a centralized system of booking a lab test, and that will be serviced by our team. They don't have to keep any flebo or anyone to service that lead. So logistics will be taken care by company. Test will be done by company. Everything will be taken care by company. Just they need to give lead, and we'll give them the commission of that lead. Okay, so that can be an extra revenue stream जहाँ पे उनको कोई extra technician की requirement नहीं है. So they can book these tests and they will get a commission all across. Yes. And after Navratri, after this month end, we'll be integrating lab collection center with all of our franchise stores. Okay, all the franchise stores. इसकी कोई extra fees रहेगी मैम जी अगर हम अभी बात करें? If our existing partner is like upgrading to lab,
collection center, we won't be charging any fee from them. For new partners, again, one who's taking pharmacy, we won't charge anything. But if someone is looking only for lab collection center, then definitely there will be a fee which they have to pay. Okay. All right. Great. And we have Mr. Abhishek Singh. I don't know which city, Abhishek ji, you are from. He wants to know, if I'm not available at the store, how is it possible to operate by staff? I think you did answer, Mayank ji, आपने किया था, because store owner has to be available at least आपके आधा टाइम वहाँ पे जरूर निकलना चाहिए, या पीक आवर, जैसे मैंक जी ने बताया, पीक आवर्स में आप जरूर वहाँ पे रहिए. And the staff has to be trained. So the company will also train. संजीवनी जो टीम है ये ट्रेन करती है पूरी टीम को, बट इसमें ओनर की रिक्वायरमेंट भी रहती है, स्पेशली इनिशियल आपके जो मंथ है जब तक बिजनेस स्टेबलाइज नहीं होता, जो आपके पीक आवर्स हैं वहाँ पे जरूर रिक्वायरमेंट है, बिकॉज फ्रेंचाइजी कैन नॉट ऑपरेट विद एब्सेंटी फ्रेंचाइजी, आपका बिजनेस नहीं चलेगा. We have Mr. Siddharth Dash from Kolkata. Kolkata, Mayank ji, we are open for Kolkata to enter. Yes, ma'am, we are open. We already have a good number in Kolkata, but yes, we are open for Kolkata. Locations. And we have Ravinder Singh. Normally, how long does it take to get the drug license? I think you mentioned 45 days हमारा time लगता है. But it depends on city to city. If it's Kolkata, it may take 3 months also. But if we talk about Delhi, it is 30-day policy from government. Either they grant license or they reject license. And in some cities in southern India, we get it 15 days also. Okay. And मैंक जी, इसमें क्योंकि फ्रेंचाइजी पहले साइन करते हैं और कई बार अगर फॉर रीजंस, वैसे तो रिजेक्शन बहुत रेयर होता है, बट अगर रिजेक्शन हो जाता है तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं फ्रेंचाइज पार्टनर? मैम, इसमें जो रीजन है वो देखना जरूरी है. हमारे कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस इस तरीके के रहे हैं. मैं 2 साल पुराना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जहां पर फ्रेंचाइज पार्टनर ने हमें ये एश्योर करा कि जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ ठीक है, और बाद में वो पता चला दैट प्रॉपर्टी वाज डिस्प्यूटेड. एक्चुअली जैसे एनक्रोच्ड लैंड थी वो, और क्योंकि वो बनते बनते अब वहां पक्का इतना बन गया कि वो कच्चा तो दिखता ही नहीं है, वो तो उसकी पक्के से ज्यादा अच्छा दिखता है वो. सो दो एनक्रोच्ड लैंड गवर्नमेंट दे डोंट गिव लाइसेंसेस. It should be authorized. It should be an authorized place. So, अगर franchise partner की गलती नहीं है, तो definitely we are liable to refund them the fee which we have taken. The maximum liability which we have is to return the fee. अगर genuine reason नहीं है, well, sorry, genuine reason है, and we can work out something, we can request officer. So we'll be requesting that officer. Okay, all right. जी. Good. And we have Mr. Kamal Khetan ji. He says how much margins in the business overall. अगर हम blended margin की बात करें, आपने बताया anything between 20 to 60% in case of generic हमारे margins रहते हैं. तो अगर हम blended margin की बात करें, हमारे क्या रहते हैं? How much can I give discount to customers? मैंक जी, आपने बोला 10% का discount रहता है. So is that a standard discount across all your outlets? No, ma'am. Again, it will be zone wise. If we are in eastern zone, it's a quite high discount market. जो आपका Calcutta region है, ये high discount market का है ये region. हमें मैम margins को कभी भी हम लोग average out इस तरीके से नहीं कर सकते हैं. अगर कहीं high discounted markets हैं, तो वहाँ पर high margin products substitute करने होते हैं. उस चीज को substitute करने के लिए हमें अच्छी manpower की requirement होती है. अगर हम अच्छी मैन पावर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और कस्टमर को एक्चुअली नहीं पता होता कि वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और आपको एज अ कस्टमर कभी किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सारी दवाइयां अच्छी कंपनी की दे रहे हैं. हम लोग कोई प्राइवेट लेबल्स नहीं दे रहे जहां पर हमें हमारा मे बी हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. अगर मैं सिप्ला कंपनी की मेडिसिन से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और मेरी स्टोर का मार्जिन बढ़ रहा है, कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं है और मेरे स्टोर पार्टनर को भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी. सो in Calcutta, average discount is 15 to 20%. Again, when we give 15 to 20% discount, then we need to have a good manpower who can substitute products with high margin products. Every prescription has few items which can be substituted with high margin products. Okay. So that training, we help our team, we help our store managers to get that thing trained for, and they can substitute. And this needs to be, this motivation has to come from franchise partner to their teams कि आपको इस तरीके से मैनेज करना है. Right, right, ma'am. जी, मैं कुछ questions और लूँगी. I don't know if I can take. We have almost 50 unanswered questions still. Friends, we'll see how much we can cover, and कुछ में collective
क्वेश्चंस भी लूंगी, एंड फॉर रेस्ट आई विल रिक्वेस्ट मयंक जी, वी कैन ऑल डिस्कस वन टू वन विद ऑल ऑफ यू। एक चीज मयंक जी जो आई थिंक दिस इज आल्सो माइट बी इन द माइंड्स ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, इसमें ऐसी कोई इन्वेंट्री जो मूवेबल नहीं है हमारी, ऐसा स्टॉक रहता है जो मूव नहीं करता, उस स्टॉक का क्या होता है? सम रिटर्न पॉलिसी, व्हाट इज द पॉलिसी ऑन नॉन मूविंग स्टॉक्स या स्लो मूविंग स्टॉक्स के ऊपर, और इवन एक्सपायर्ड ड्रग्स? या मैम, सबसे पहले तो जो हम इन्वेंट्री देते हैं वो अपने फास्ट मूविंग इन्वेंट्री देते हैं, और जो ओपनिंग स्टॉक होती है वही कंपनी की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड इन्वेंट्री है। उसके बाद टेन्योर में हम कभी भी कोई भी इन्वेंट्री इन्फ्लुएंस नहीं करते या फोर्स नहीं करते अपने फ्रेंचाइज पार्टनर को कि आपको ये प्रोडक्ट रखना जरूरी है, ये नहीं रखोगे तो मैं फ्रेंचाइज का सपोर्ट नहीं दूंगा। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है हम वही मेडिसिन देते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर उनके पास गलत आ गया है फ्रेंचाइजर की तरफ से, वो इमीडिएटली उसको रिटर्न कर सकते हैं। उस पर कोई भी बाउंडेशन, कोई भी कटिंग, कोई भी डिडक्शंस नहीं है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट नॉन मूविंग होता है मैम, जो इनिशियल स्टॉक है उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई प्रोडक्ट नहीं मूव होता, उसको हम फास्ट मूविंग से एक्सचेंज कर देते हैं। देयर इज नो हैंडलिंग चार्जेस और देयर इज नो डिडक्शन इन दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसमें कोई डिडक्शन हम लोग नहीं करते मैम। उसके बाद भी अगर उनकी इन्वेंट्री में कोई नॉन मूविंग आता है तो हम लोग वो वापसी लेते हैं, लेकिन वो अगेन गुड नोट पे लेते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से हमने कोई फोर्स नहीं करा हुआ है। अगर क्लाइंट कहते हैं नहीं मुझे इमीडिएटली रिटर्न चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें वो चैनलाइज करनी होती है अपने स्टोर्स पर। सो वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड विल बी चैनलाइजिंग इट टू अदर स्टोर्स। Sure. From manufacturer side, we have a limited percentage of return which we can return to them. Our sales is like maybe we are doing good sales, so as compared to that good sales, we have good amount of percentage available with us, or good amount of returnable slot available with us. Still, we request our franchise partner to provide us with the list, and we channelize that to other stores. And in our new tech, which is ready, it will be done through automated manner. Every month they'll be getting calls from our backend team, and they'll be requested to return their non-moving items, and we'll be regulating every month. This will be starting from next month onwards. Okay, very helpful. Thank you. एक क्वेश्चन जो पुनीत माखन जी पूछ रहे हैं, I think he's asked 5 questions overall. We have already answered I think 2 in our discussions, and 2-3 जो मैं लेना चाहूंगी इसमें से ये पूछ रहे हैं कि what royalty, पुनीत जी, there is no royalty in this structure. There's only a franchise fee, and सारी supply chain company will manage and handle. And दूसरा ये पूछना चाहते हैं कि जैसे लोकेशन जब फाइनलाइज करते हैं, is there a criteria or a research team that finalizes and approves the location? Yes, ma'am, there is a team. We have a dedicated team for it, but franchise that location will be searched by our team and franchise partner both. So one which is shortlisted, we may arrange a physical visit, or we may do it through maybe a video call or like our online survey only. Because after COVID, it is difficult for us to send people to verify that property physically. Right. I think Puneet ji is from Ranchi, and Puneet ji, I hope this is answered. And he's also, I will take some more questions. Mayank ji, बहुत quickly मैं लूंगी, I cannot cover all. एक जो क्वेश्चन है मिस्टर प्रवीण लाभ पूछना चाहते हैं, if he already is running an existing pharmacy, and what would it cost him to transform the existing pharmacy to a Sanjeevani pharmacy? मतलब conversion franchisee की बात करेंगे, कोई existing pharmacy store है वो convert करना चाहते हैं, उनकी क्या investment रहेगी? That we can work out, like we can one-on-one discuss on it, how good or what is the status of that store, and we'll plan accordingly. एक क्वेश्चन मैम बीच में रह गया था एक्सपायरी का, किसी so on expiry we take all medicines which are expired, we take them back. So one should return expiry medicines within 2 months of getting expired. अगर आज कोई medicine expire हुई है 2 महीने में आप वापस कर सकते हैं. It should be a packed product. कोई बॉटल खुली भी वापसी नहीं होगी, और लूज टैबलेट्स वापसी नहीं होंगी एक्सपायर, और जेनरिक कैटेगरी की कोई एक्सपायरी नहीं होती. बाकी मैक्सिमम मेडिसिन प्रोडक्ट की एक्सपायरी हो जाती है. एक्सपायरी में कॉस्ट वैल्यू का 10 to 15% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमसे हैंडलिंग चार्जेस चार्ज करती है. सो वी चार्ज सेम फ्रॉम आवर फ्रेंचाइज पार्टनर. श्योर. इनकी अतुल जी पूछ रहे हैं, ये हमारे पार्टनर हैं अगेन फ्रॉम वेस्ट इंडिया, अगर हम डॉक्टर के साथ टाई अप करते हैं, सम काइंड ऑफ कमीशन स्ट्रक्चर दैट वी फिक्स अप विद देम. ही वांटेड टू नो. First, on open forum it is difficult to comment on this part, but
See, we are flexible to it. Again, if someone is asking for any amount or any percentage, then he has to give us that margin, because end of the day, whatever sharing would come will come from the margins which will be earning by selling a product. So for instance, if a doctor asks us for some margin and we need to give discount also to customer, so he need to help us in selling high margin product where we get both the things serviced and we also earn something out of it. Sure. मैंग जी, एक क्वेश्चन जो सिटीज का मेरे को लगता रह गया था, कौन सी हमारी प्रायोरिटी सिटीज है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं? आई सी दैट क्वेश्चन कमिंग अगेन एंड अगेन. कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होगी जाना चाहते हैं? एंड बॉम्बे से वी हैव नेहा गुप्ता जी. शी इज आस्किंग हाउ मेनी आउटलेट्स आर देयर इन बॉम्बे? So in Bombay right now we have 3 outlets, one in Thane and rest 2 are in main Mumbai. I'll share that list with team. And हम लोग जो priority cities है ma'am, we are almost there in like all the regions. Still our main focus is in Jaipur, then Calcutta, Patna, after that Ahmedabad, MP. We want to work in MP aggressively. MP is a very good market. Then southern region, all of the cities, we are almost there in each and every city, and we are open for all the cities. Okay. Ji. Right. And I think a couple of more questions before we let you go, मैंग जी. इसमें जो टेरिटरी हम देते हैं या एक स्टोर के राइट्स देते हैं, वो क्या रेडियस रहता है एक स्टोर से दूसरे स्टोर के बीच में? और does it vary between tier 1 and 2 cities? It's a small 200 square feet convenience store model. Exclusive right we give for 1 kilometer, as no one would come from more than 1 kilometer to buy medicine from our store. Still, we are flexible on that part also. First of all, as a franchisor, we are one of the most flexible companies. Maybe that's why we are the only company who's able to work for last 5 years continuously and able to deliver. So we are flexible on that part. But usually we give 1 and 1.5 kilometer to our every franchise. Right. Okay. I think very helpful, मैंग जी. I don't know अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो आप लेना चाहते हैं. We have a question from Neetu Vidji. She's asking if you're open for Punjab, a place called Dhakoli there. In Punjab, there are certain limitations on license part. New license are not granted usually. So there is a transfer license system in Punjab. So any partner who's willing to work in Punjab, we are open for Punjab, but they need to give us time to get a license. There, getting a location is easy, but getting a license is tough. So it may take 2 months, 3 months, or 6 months time to get a license. Right. Right. And we have Abhishek Singh. He's asking Bhojpur in Bihar, and बल्कि बिहार से बहुत सारे inquiries हैं जो आ रहे हैं. बिहार आपने बताया, पटना हो गया, which are some of the locations जो आप देख रहे हैं करने के लिए. I'm already Abhishek Singh. हाँ जी, sorry. Ma'am, we are open. We can give franchise in Bihar. In Katihar se aisa, so we have a store in Forbesganj. Then Patna, we are already there. Sahasra. There are many cities we have covered in Bihar, and we are open for Bihar. Bihar is one of the most. It is one of the best market for pharmaceutical industry. Right. And we also have Mr. Abhishek Singh. He's saying he's already working with Mankind Pharma, and he would like to open 2 locations of Sanjeevani in Bhojpur. Abhishek ji, our teams will reach out to you. मैंने अपना नंबर भी इसमें डाला है, हॉटलाइन नंबर. हमारी टीम्स भी आपको रीच आउट करेंगी मैंग जी से बात कराने के लिए. And great, I think we've kind of covered lot. But any questions मैंग जी जो आप देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं? जो पिक करेंगे, हाँ जो पिक करेंगे, I'm fine with it. I don't mind. Jam cities Ambala, Patiala, Mandsaur in MP, Chandigarh पूछना चाहते हैं, तेलंगाना, Warangal are available in Chandigarh. Chandigarh market is good for work, but again we have to keep patience in Chandigarh because we have more of retired people in Chandigarh as per my understanding and my experience in Chandigarh. So if we give time in Chandigarh, definitely Chandigarh is a good market and we can get license in Chandigarh. It takes 30 to 45 days to get a license in Chandigarh. And Shadol, Umaria in MP is where Rahul Soni ji is asking for. I think 2-3 बार उन्होंने पूछा है. So Shadol and Umaria in Madhya Pradesh. नहीं, अगेन मेरे को दोबारा बताएं क्या पूछा है मैम? शाहदौल है जगह मैम जी, शाहदौल है, उमारिया है मध्य प्रदेश में यहाँ पे.
About MP, we are flexible and we want to start venturing in MP. MP is a very good market. And Then there is a Ahmedabad, question. Ahmedabad, we are open in Ahmedabad. We have 3 stores in Ahmedabad and 1 store in Mehsana. So Ahmedabad, we are open. Ahmedabad is a good market, but again, highly discounted market. So one has to keep patience and good team to sustain. So it's a good market to work, ma'am. sure. And And Nagpur we open hai. We have Suhashi from Nagpur, Om Prakash ji, Nagpur, Bhuvneshwar. we have done one sign up. So soon we'll be launching our store in Nagpur. So Nagpur, we are open. Sure, sure. Friends, we already overshot the time. I know we have a lot of questions still coming in. हम कोशिश करेंगे कि आप सबसे between the next 2 days, आज से लेके Wednesday तक हम reach out करेंगे. Everybody who's asked question, we have almost 100 plus questions being asked from the audience, Mayank ji. And friends, जितना कोशिश हम कर सकें, we have tried to cover all these questions. मैं request करूंगी एक दिन Mayank ji आपसे जो हमारी team आपके साथ fix कर सके. We can do 1 or 2 days. It looks like 2 या 3 दिन हमें शायद लगेंगे सारी inquiries को आपसे बात कराने के लिए. So Ashna, any date that we have fixed, which is 13th of this month, friends. Yes, So 13th is the day. Today is 5th and 13th आपका अगले हफ्ता पड़ता है, which is Thursday. So what we can do is we can split between 2 days of discovery days, because with so many inquiries coming in हम एक दिन सारा cover up नहीं कर पाएंगे. So one we can do on 13th, और कुछ अगर हम weekend पे भी ले सकेंगे मैम जी, we'll bring some inquiries over the weekend also. So friends, 13th we'll keep and once our team start reaching out to you, अगर आप for reasons अगर 13th को available नहीं है, तो you can also advise us on a time or a date that you are available. We'll ensure that we'll take up that time with Mayank ji and his team. And I'm sure Mayank ji will also need to involve a lot of his team members to come on calls. Last Mayank ji, I think we have somebody from Kerala. वो 2-3 बार पूछ चुके हैं. Kerala हमारा franchise है. We are open for Kerala. Right now, we don't have any franchise in Kerala, but we are open for Kerala. Okay. And Saurabh ji has asked again. I think I missed Saurabh ji your question. आपने पूछा, I have a land. Are you eligible? So land नहीं, we need a place in the retail location. Neighborhood markets होंगी. अगर वहाँ पे कोई अगर आपकी property available है, that should be good enough for us. So friends, thank you so much for overwhelming response. जितना कोशिश हुआ, we tried and covered all your questions. But all these questions are recorded with us, and जितने भी questions आप सबने पूछे हैं, our teams will reach out to you. सारी presentation, ROI, CAPEX, OPEX जो आप सब जानना चाहते हैं, before you get on a call with Mayank ji and his team, भी सारी information आपको Franchise India की team आपसे share करेंगी. And 13 तारीख को हम date रख रहे हैं Discovery Day के लिए. And अगर इस date पे for reasons अगर आप available नहीं है, अपनी date आप advise कर सकते हैं. We'll block that date because we will anyways need 2 to 3 days time for all these discussions. And before we close, Mayank ji, एक कोई भी last आपका remark जो आप बोलना चाहते हैं, कोई message आप हमारे audience को देना चाहते हैं, because there are a lot of questions which have come in. Anything that you want to pass on as a message to everyone? Ma'am, it's a good opportunity. Pharmacy is one thing which is a never-ending business. After COVID, we have seen everything was closed, and pharmacy is one thing which was never closed. For sure, many people ventured in pharmacy in last 1 year or 2 years, but still there is lot of gap in market which can be filled. It's not only an investment opportunity. If someone is looking to get to set up a business for generation, then he should venture in it. It's about trust. If someone is giving time, see, when we open a pharmacy, it will not get response immediately. Response will come over time. We have to invest time, as trust is something which drives business in pharmacy. Absolutely. For that only we are taking franchisee, and that trust will come after we are consistently performing, we are consistently delivering it to our customers. Whatever we are committing, we should deliver, and the trust will come. Absolutely. So that was from my side. If someone is willing to work with us, we are there. We are 100% flexible on everything. And Mayank ji, I think a question I think I might have missed in between. We have one of our investors asking, लखीसराय पूछना चाहते हैं बिहार में, वहाँ पे खोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खोल सकते हैं मैम. Any space which is where we can get the drug license, we can start. लखीसराय के आसपास शायद मेरा या हमारा कोई स्टोर नहीं है, so definitely we can start लखीसराय. बिहार अच्छी मार्केट है काम करने के.
हाँ जी बिल्कुल। एंड फ्रेंड्स, हमने जितना कोशिश हुआ ले सके। एंड नवीन जी, आप पूछ रहे हैं डिस्कवरी डे क्या होता है। डिस्कवरी डे इज अ डे जहाँ पे हम जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स जो मयंक जी से, उनकी टीम से बात करना चाहते हैं डिटेल में आपकी प्रॉपर्टी को लेके, लोकेशन को लेके, इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल को लेके, तो वो सारी मीटिंग्स हम आपकी संजीवनी की टीम से कराते हैं। उससे पहले फ्रेंचाइज इंडिया की टीम आपसे बात करती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, और उसके बाद आपकी मीटिंग्स हैं जो हम कंपनी से ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी ने भी पूछा था फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए, संजीवनी इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर। जो भी दिल्ली में मिलना चाहते हैं या दिल्ली बेस्ड आउट है, वो दिल्ली में मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेंचाइज इंडिया की टीम्स पूरे हिंदुस्तान में है। वी आर स्प्रेड इन अबाउट 85 सिटीज अक्रॉस इंडिया। हमारी डायरेक्ट टीम्स भी इस ब्रांड के ऊपर काम कर रही है। एंड वी हैव आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइज कंसल्टेंट्स हु आर वर्किंग ऑन संजीवनी। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारी सारी सिटीज में जहाँ पे आप प्रेजेंट है, हमारी टीम्स या हमारे पार्टनर्स रहेंगे उन लोकेशंस पे। एंड उसके बाद आप अगर फेस टू फेस ब्रांड से मीट करना चाहते हैं, यू विल हैव टू ट्रैवल डाउन टू मे बी दिल्ली फॉर अ मीटिंग, और in case the team of Sanjeevani is traveling to any of these locations, that can also be a possibility where maybe a face to face meeting can happen. So with this, Mayank ji, thank you so much. And Jagdish ji, Dhanbad ke liye bhi open hai. You can open in Dhanbad also. And I'd like to thank all of you friends. Overwhelming response. All your queries will be answered in detail by our teams and Mayank ji and his team. Thank you so much, Mayank ji, once again. And thank you, friends, again for being with us and patiently listening and putting all your questions for the last, I would say, 72 odd minutes with us. Thank you so much. And over to you, Ashwin. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. So thank you so much, Mayank ji. आज हमें join करने के लिए, it was really inspirational interacting with you. Thank you so much, Sonia ma'am. Thank you so much, dear friends, who have shown us so much of love. Blessing to each one of us. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. We request each one of you to save this number in your phone book because we are sharing regular updates through broadcast message. You can also join Franchise India at different social handles. Information on your screen. Please do visit us, subscribe our Facebook link. We are available at the Franchise India Brands Limited Facebook page. All the recorded versions are available under video section. Do share your feedback, suggestion, because that improves our processes and motivates us. You can also join Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn ID. Information on your screen. And tomorrow we invite you to join us for the journey of the Momo Panda and La Kheer Delhi. That's the brand we are bringing for you. It's an F&B opportunity for each one of you where you can start your business. It's a QSR as well as cart model. You can start your business with 8 lakh rupees. So please do registration at same business hotline number so that you can join us sharp 12 p.m. tomorrow. Thank you so much once again for joining us today. Have a great day. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you, Mayank ji. Thank you.